we are going to learn subtracting one digit number by using vertical subtraction method. Okay, so without wasting time, let's begin. Subtracting number vertically. We can subtract the number vertically. Let's understand how. Let's understand this vertical subtraction with some example. Okay, now the first question is find 6 minus 4. Okay, हमेशा हमें याद रखना है हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है स्लीपिंग लाइन, जैसे अभी ये क्वेश्चन लिखा है. ओके, स्लीपिंग लाइन में लिखा है, राइट. बट जब हम वर्टिकल सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जो अब हम इस क्लास में अभी हम सीख रहे हैं, इन दिस वी हैव टू राइट दिस 6 minus 4 इनटू द स्टैंडिंग लाइन. अब स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है? ऐसी होती है ना. ऐसे ही हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हम स्टैंड होते हैं वैसे स्टैंडिंग लाइन होती है, और उसे ही हम वर्टिकल बोलते हैं. ओके, तो हमें क्या करना है? 6 minus 4 को वर्टिकली लिखना है. ओके, सो हाउ टू राइट इट? वी विल राइट इट लाइक 6 minus 4. देखो 6 minus 4 आ गया. सो 6 minus 4 अब हम ऐसे लिखेंगे, 6 के नीचे 4 और माइनस साइन यहाँ पे लेफ्ट में आता है. ओके, नाउ लेट्स डू सब्ट्रैक्शन. ओके, सो वी हैव 6 smileys here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of this 6, I want to take away 4. Okay, so let's do it. 1, 2, 3, 4. Now how many left? 2 left. So the answer is 2. Okay, so if we do, always remember, subtracting number horizontally or vertically gives same answer. ओके, इसका मीनिंग ये है कि 6 minus 4 आप स्लिपिंग लाइन में ऐसे लिखो या फिर आप स्टैंडिंग लाइन में वर्टिकल में ऐसे लिखो, दोनों का आंसर 2 ही आएगा. ओके, ओनली फॉर्मेट इज डिफरेंट बट द आंसर इज सेम. ओके, चलिए नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फाइंड 9 minus 2. So firstly we will write it in the vertical form 9 minus 2. Okay, now we have 9 smileys here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Among these 9, we have to subtract 2. Okay, so we will subtract 2. Now how many left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is 7. Okay, now the next question is 7 minus 3. So first of all, we will write in the vertical form 7 minus 3. Okay, and now we will draw 7 smileys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and among these 7, we need to subtract this number 3. Okay, so we will subtract 1, 2, 3. Now how much left? 1, 2, 3, and 4. So answer is 4. Okay, now let's take one more example. Find 8 minus 5. Okay, so first of all, we will write 8 minus 5 इन वर्टिकल फॉर्मेट. हमें ऐसा ही लिखना है, 8 के नीचे 5 आएगा और माइनस साइन लेफ्ट में आएगा. ठीक है, तो चलिए फर्स्टली वी विल पुट 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब हमें क्या करना है? 5 सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलो भाई 5 कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट. 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मच लेफ्ट? 1, 2, 3. सो द आंसर इज 3. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, आ रहा है ना मजा? चलो 5 minus 3 अब हमें करना है. ओके, सो वी विल राइट 5 minus 3 इन द वर्टिकल फॉर्मेट. ठीक है, तो वी आर राइटिंग हियर 5 minus 3. ओके, आ रहा है ना समझ में? हमें क्या करना है? वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है. वर्टिकल का मीनिंग होता है स्टैंडिंग लाइन, है ना. तो चलो भाई अभी हम 5 स्माइली ड्रॉ कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. आउट ऑफ दिस 5 smileys we need to subtract 3. 1, 2, 3. How much left? 1 and 2. So the answer is 2. That's all for today's session. Thank you so much for watching. Happy learning. If you like this video, please subscribe our channel to get more videos like this.